Hello, Hi. Hi. my name is Kabir. My name is Prem. So I'm here with Prem Vishnu, and this is Yog Kabir. And I want to ask some questions to Prem Vishnu because she says I'm not saying anything. you say a lot, and now you're not saying anything when it comes to speak in front of camera. Come on, what are you saying? I was saying if you are feeling your loneliness, you just don't distract yourself and just go and dive into it. So she says if you're feeling your loneliness, then you don't just escape from it, Yeah. and you dive into it. Yeah. That's recorded. Yeah. And now anytime she's facing the loneliness, universe is watching that she doesn't have to escape from it, and she has to dive into it. I'm speaking to the universe right now, and I want this universe to know that if she faces her loneliness, she will not escape. Yeah. How? What are the ways of escape? You just try to avoid that pain of that void by creating lots of first your phone is your biggest distraction. Your phone is your biggest distraction, and then you start looking at something that where you can forgot your that void, and you try to go to find something जहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको जो void है वो ना दिखे. Okay, so you're saying that Mostly people try to escape through relationship. So you're saying people get into relationship to avoid loneliness? Yeah, exactly. Okay. So you are saying that people get into relationship to avoid loneliness. They use phone to avoid loneliness. Then they mostly phone and and then अगर phone से भी नहीं हो रहा है तो they will go and find a partner. they will go and try to find a partner. Okay. So you are saying that you will not I used to किसी और को नहीं Use बोलते ना, I used to. okay, you will not get into relationship now. Yeah. One thing, you will not use your phone now. I will use your phone with awareness that Not I my am phone, your phone. Yeah. फोन को बिल्कुल यूज ना करूं ये तो पॉसिबल नहीं है, बट वेन एवर आई एम इनटू पेन, ठीक है, मुझे पेन जब फील होता है कि मैं अकेली हूँ या फिर मुझे लोनलीनेस फील हो रहा है, तो आई फील दैट पेन व्हाइल यूजिंग फोन आल्सो. मेरा फोन में ध्यान नहीं होता है, उस पेन में ध्यान होता है मेरा. ऑनेस्टली बता रही हूँ. So that means you are escaping? No. You are not escaping, No. but you are facing your pain. Yeah. By using the phone. If I will forget about my pain and I will start watching and scrolling, then definitely I am escaping from my pain. But if I am aware of my pain while watching phone also, So what do you do on phone? yes, I used to read philosophical quotes and mostly आजकल. And what else? Videos regarding some books, reviews, short storytelling, and ज्यादातर मैं philosophical. And how much time you spend on reels watching? ज्यादा नहीं. And Facebook? No, Facebook तो मैं खोलती ही And WhatsApp? खोलती ही नहीं हूँ, बहुत And कम. WhatsApp? बहुत कम. And like calling, WhatsApp calling and all that? तुझे मैसेज का रिप्लाई करने के लिए ही खोलती हूँ, नहीं तो She only this is recorded. She only uses WhatsApp to reply to my message. Universe is listening right now. Yeah. Universe is watching right now. This is getting recorded. Not live, but this is getting recorded. Now she's giving me an hour. आजकल अब की बात बोल रही हूँ. आजकल now she's using अब की बात बोल रही है कि she's using the phone to message me, reply my messages. Otherwise she is not using WhatsApp, and this is that's her honest truth. That's your honest truth. Yes. बहुत कम नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल किसी से बात नहीं करती हूँ, पर ज्यादातर तेरे साथ बात कर रही हूँ. Okay, that's not a very big issue. Even if you're talking to someone, that's your freedom, that's your life. So the thing is, I want to ask, नहीं यार, what are the नहीं, यहाँ पे ऑनेस्ट होके सब कुछ बता रहे हो ना, तो ये
that अभी की ट्रूथ है मेरी। what are the other बात नहीं कर रही थी ना तो मैं व्हाट्सएप यूज ही नहीं कर रही थी। what are the other pain that okay, let's say if I'm not talking to you, I'm not having the conversation with you, and I'm busy somewhere else, I'm working on my job, I'm busy in market doing something, and I did not reply, I did not talk to you, I did not pick your call, then what do you do? काम कर रही थी, जॉब। हाँ, तो sometime I used to talk to my daughter, and sometime Didi's sister, Now Didi and sister daughter has come and sister has come baby, sisters, and and और किसके साथ बात करती थी मैं? तू नहीं था तो? कोई नहीं। कोई नहीं। Okay. No. मैं तो पिछले 1 महीने से गांव में थी ना। गांव में। Okay. And I used to talk to दादू। Dadu. Okay. So it's okay. And जब गांव में थी फोन देखती नहीं थी। now, what is your vision in life? What is your vision? What do you feel like you want? You said about vision when you were talking to me on phone some time ago, and so really, what is your vision, and how is it that you want to make that vision come true? No, baby. It's a big question, and you can answer it easily. No, I don't want to share my vision with. Okay, you don't want to share your Yeah, vision. I don't No want- problem. मेरे So अंदर जो विजन चल रहा है ना मेरे लिए अपने लिए तो I don't want to. now you are here in Delhi, and you left your job in Jaipur some time ago. So tell us about the 1 month of experience of job that you had. It was amazing. And I see myself. I see my mind is very beautiful. So you say it was amazing experience, but then why did you when you were on call they said you're feeling very heavy here and you want to just leave this job now? Why you felt like that? My boss, he made me feel that way. क्योंकि मुझे कभी भी कॉल करना, रात में भी उठाना, कॉल करना और मैं मुझे परेशान करना like and he started showing his very toxic side जहाँ पे वो मेरी बातें सुन नहीं रहा था, मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं कुछ और बोल रही थी और वो कुछ और मतलब निकाल रहा था, which was after some time I started feeling like अगर इस तरीके से मैं इस आदमी के आसपास रहूंगी तो जिस तरीके से मैं अपने अंदर मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी एंड बहुत ही सेंस ऑफ कामनेस डेवलप हुई है ना, बहुत पेन से गुजरने के बाद आफ्टर सम टाइम अगर ऐसी सिचुएशन में मैं रही जहाँ पे बिल्कुल भी चीजें मतलब उल्टा हो रहा है, जहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है तो दूसरी चीज। So you conveyed this problem to your boss that Yeah. you're feeling like that? या And what did he say? उसने बोला कि अगर ऐसा है तो मतलब उसने ये एटीट्यूड शो किया कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ, जो भी एडजस्टमेंट है आपको करना पड़ेगा, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। And this was like a everyday thing or everyday thing? Okay, okay, all right. Okay, no problem. And then I felt like कि नहीं मेरे से That you don't want to continue Yeah. this job. Okay, okay. So now you're moving ahead towards a different नहीं ये बात location. नहीं, ये बात नहीं मेंशन करनी है मुझे। Okay, I'm just not gonna speak about it in detail. I'm just saying that now you're moving ahead from that place to a different place, different location, different path altogether, different journey, and I want to just wish you best and that you be really, really successful in life. You do great things in life, and you achieve your dreams, your vision come true, and whatever you're going to do now in this coming time turns out to be beautiful for you and for the people who comes around you, who shares this joy with you. And right now in this very moment I just want to say that thank you for sharing your insights. अरे यार मैं जो समझ रही हूँ, जो मेरा थॉट है ये मेरी प्रोस्पेक्टिव है ना, तो जो मैं सोचती हूँ, जो मैंने फील किया है, जो मैंने महसूस किया है वो मैंने बताया। मुझे नहीं पता कि दूसरा इंसान इस चीज को किस तरीके से लेता है, उसका प्रोस्पेक्टिव। No, that is not the Yeah. point कि दूसरा क्या लेता है. Is we are just here to express our feelings, express our thoughts, our
whatever has happened. So it's not, what others takes it, it doesn't matter. So people, everyone has different life, everyone is having a different journey. I will tell you one thing, जो मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गई हूँ. पूरी तरीके से लोनलीनेस का जो वॉइड होता है ना, वो फुलफिल नहीं हो पाता. इंसान उससे, मैं निकल नहीं पाई हूँ उससे. मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वॉइड है अभी भी, बट एट द सेम टाइम आई एम अवेयर ऑफ दैट कि ये वॉइड कोई और नहीं फुलफिल कर पाएगा. मुझे खुद को फुलफिल करना है, या फिर होता भी है या फुलफिल नहीं भी होता है, तो मैं अब इस दौड़ में नहीं हूँ कि मुझे इसको फुलफिल करना है किसी भी वे में. Got it. So now, एक्सेप्ट कर लिया है. what is the one thing, like, from the very core of your being, that you may have realized that pain, suffering, joy, whatever the deepest experience of your life has given to you, that one thing that comes really, that speaks through your soul, that you must say that you have, not to conclude the whole of the story of your life, we cannot conclude, but something that you can say very honestly. Yeah. What is it? पता है, oh my god, ये तो like I want to say this, जो कुछ भी हुआ है ना, and whatever has happened lastly, and whatever I have went through, जब भी मैं खुद को देखती हूँ ना आईने में खड़ी होके, तो मुझे ऐसा लगता है कि this is it. I feel like you are very beautiful, and you are very beautiful soul, and your mind is very beautiful. Honestly, I appreciate myself a lot. I have never done that before. I have never loved myself like this before. Kabhi. Like when? Like how did it, and when did it start to happen? Exactly मुझे नहीं पता है, but it मुझे पता है कि ये स्टार्ट हो चुका था जब मैं नेपाल गई थी इस बार. पर जब मुझे ये बहुत ही कोर में मतलब रियलाइज हुआ, जब मैंने खुद को देखा और मुझे ऐसा लगा कि आई लव यू, आई लव दिस बॉडी, आई लव दिस माइंड, एंड आई लव माई सेल्फ. ऐसे मुझे जब मैं गाँव में थी ना, इस बार 1 महीने पहले गाँव में थी ना, तो वहाँ पे मैं आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, एंड आई वाज मेकिंग वीडियो, एंड आई स्टार्टेड वाचिंग दैट वीडियो ऑन माय फोन, एंड आई वाज, मैं खटिए पे लेटी थी, एंड देन आई वाज वाचिंग माय वीडियो, एंड आई वाज लुकिंग एट माय सेल्फ, एंड आई फेल्ट लाइक माय गॉड. I started reflecting everything, and I felt like I'm feeling like crying, like कि मुझे वो बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अपने आप को देख के इतना अच्छा लग रहा था ना. I started feeling like कि यार, you are very strong, you have done like कितना कुछ. मेरी जर्नी में देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तू, you are very beautiful. इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने खुद को कैसे संभाला, और किस तरीके से मैंने आपको खुद को समेटा, एंड देन द वे आई एम बिकमिंग currently, and the mind is like becoming so calm and stable, and like I'm feeling very relaxed, and I'm not scattered, and I know that what I want in life, and like it's like very different feeling. And जब मैंने वो चीज सब कुछ देखा, और मैंने अपनी जर्नी को देखा, पीछे मुड़ के मैंने देखा, जब मैं नोएडा में थी, एंड उससे पहले मैं जहाँ थी, और मैं निसर्गा में थी या फिर दिल्ली में थी, सब कुछ रिफ्लेक्शन पे आया, और मैंने जब वो सारी चीजें मेरे माइंड में पीछे की तरफ वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, एंड देन व्हेन आई सॉ दैट वीडियो, एंड शी वाज डांसिंग, एंड शी वाज सो हैप्पी व्हाइल डांसिंग, एंड आई फील लाइक हाउ, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी खुद को समेटना और ऐसे डांस करना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है. That moment I felt like you are very strong, and you are very beautiful human being, and I feel like गलत एक्सपीरियंस की वजह से ना खुद को खोना नहीं चाहिए. मुझे ये फील हुआ, एंड मैंने नहीं खोया कभी भी, एंड that made me feel like I'm falling in love with myself, and I feel like you are very beautiful. You are very beautiful. You are a very beautiful human being. I think that's the best you can say. That's the most honest feeling. So thank you for being so honest.